Good afternoon, dear esteemed media friends from both electronic and print media. I welcome you all in this hurriedly called press conference from the government side. The allegations made against the present Chief Minister of Arunachal Pradesh, Sri Pema Kandu, by All Nisi Youth Association are vague and imaginary without any basis. Ever since BJP took the reins of Arunachal Pradesh, with the Chief Minister, Sri Pema Kandu, as its head, the government has adopted a pan-Arunachal, I repeat, pan-Arunachal view in its developmental agenda by ensuring an inclusive and participatory approach in all decision making. The annual budgets, which were earlier done in closed doors, are now participatory, where all stakeholders have a say. A wider consultation with all strata of people is being carried out to give the formal shape to any decision or policy of the government. This government has been maintaining utmost transparency and accountability with heavy hands on corruption. We have received numbers of allegations. There is an allegation on the issue raised on creation of Chief Engineer Northwest Zone. It is not necessary to point out that our state is the largest in the Northeast India and the most sparsely populated state in the country. Taking governance and development to the doorsteps of each citizen is the mandate and duty of the government. It was a conscious decision of the government to decentralize of all its citizens. Accordingly, we have created divisional commissioners East and West. For administration and for works, we have, for example, in PWD, we have Northwest Zone, Western Zone, Central Zone A, Central Zone B, and the Eastern Zone. And all these zones has been created to take the governance at the doorstep of its citizen. Government has consciously created administrative structures to decentralize governance to the doorsteps and to improve or ease of living of all its citizens. There is another allegation of creation of DOCA, Department of Tawang and the West Coming and Department of Boti Language. This is totally a misleading, as there is no such department as Department of Tawang and West Coming and Department of Boti Language, except we have got Department of DOCA, which was created way back in 2009-10. Therefore, such unfounded allegations to disrupt our age-old tribal harmony is very dangerous trend
for our state. We must all disown such tendencies with narrow disturbing agendas outrightly. And there is another allegation that no funds release and all funds go to Northwest Zone and Eastern Zone. Such allegations have been raised time and again by the same persons. Several times, detailed records were shared by government with them and media too. This irresponsible attempt to bring regionalism and to sow seeds of enmity amongst peace-loving tribals is shameful to say the least. The allegations are totally baseless, and the records speaks otherwise. I shall read out the fund details as under. A. SIDF and the RE. Under SIDF LOC of rupees 2,269.27 crore was released to various work departments for the period from financial year 2017-2018 to financial year 2020-2021. Further, during financial year 2020-2021, additional LOC authorization of rupees 752.79 crore was provided against pending liabilities of SIDF and the additional RE of 2017, 2018 and the 2018-2019. Almost all liabilities under SIDF and the RE has been cleared. B. PWD zone-wise total fund release is on 2019-2020, 10th of January 2022 till yesterday. Western Zone, the total release was 826.2, which is 31.16% of total fund released. Eastern Zone, 507.76 crore, which is 19.16% total released from the total released. Central Zone A, that is 454.63 crore, that is 17.15% of the total released. Central Zone B, 434.99 crore, that is 16.41% of total released. And we have one more zone, that is Highway Zone. Highway Zone is different than Northwest Zone, that is on 322.47 crore, that is 12.16% of the total released. Highway Zone have 104.20, that is 3.93%. Total so far we have released in all these 6 zones in the PW departments is 2,650.7 crore, the total released. And we have got an allegation of misappropriation of funds. Our government is a transparent government. Any allegations of misappropriations of fund are open to scrutiny. Action against corrupt has been taken, I think, ever since Pema Khandu led the state. Ever since Pema Khandu led the state as a chief minister, we have arrested, I think, the largest number of corrupt and has been
action has been taken in totality. Instead of vague allegations, specific complaints will be taken cognizance of. Legal recourse is always there. The clean image of the government and no tolerance to corrupt practice is known to all. Previously, no government had dared to take action on corrupt practices, but this government, Pema Kandu government, has done without any fear or favor. Therefore, I want to tell, Bandh coals only hampers the economic affairs of the state or a country, causing unnecessary harassment to the people. Had the state government not heard them or did not call them for talk, would have been a different matter. But despite repeated invitations for clarification, I am repeating, despite repeated invitation for clarification, the ANYA team did not turn up for the reason best known to them. It appears that the main motive of this issue is to create disharmony in the state. Bandh has been declared as illegal and unconstitutional by various judgments of the Supreme Court of India, Kerala High Court, as well as Guwahati High Court. The Arunachal Pradesh Unlawful Activities Prevention Act 2014 also attracts similar provisions against Bandh coals. If the unconstitutional Bandh coal is not withdrawn immediately, such strict legal action will be taken against the enforcers. मैं इसमें एक चीज क्लियर करना चाहता हूं. Honorable courts, different courts, Honorable Supreme Court और Honorable Kerala High Court, Honorable Guwahati High Court ने जो जजमेंट दे के रखा है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या हमारा अपना स्टेट का अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2014 में जो बनाया है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन या कोई किसी को क्रिपल करने का या क्रश करने का ये कानून नहीं है. ये कानून सिर्फ और सिर्फ लोगों का सेफ्टी, प्रॉपर्टी का सिक्योरिटी, लोगों का सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, डैमेज नहीं करने के लिए, उसी सेफ्टी के लिए कानून बनाया गया है. Therefore, apart from being a spokesperson of the government, I am also holding the Department of Home. तो मेरा एक दायित्व है, मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द सेफ एंड सिक्योरिटी, स्टेट का सेफ्टी के लिए, स्टेट का सिक्योरिटी के लिए मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदार है. स्टेट का जो प्रॉपर्टीज है इसको सेफगार्ड करना, जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को जो ब्रिज करेंगे, इन लोग को हम लोग समझाना, ये हम लोग का एक जिम्मेदार है. I should make it very clear that the security of citizens, protections of life and property of the state is the responsibility of the government. And we are committed to deliver 100% to ensure their safety. तो कल को अगर कोई भी बंद कॉलर या कोई भी यूनियन या ऑर्गेनाइजेशन हो, बंद कॉल करके, एक्सक्यूज मी, बंद कॉल करके अगर किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे, ये डिफरेंट जो जजमेंट है कोर्ट्स का, इस जजमेंट का अनुसार, इस जजमेंट में ये कहा गया कि कोई भी डैमेज होता है प्रॉपर्टी या एसेट, ये सारा चीज को रिकवरी विल बी डन फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड एंड दैट विल बी एडहेयर टू. कल अन्या बंद कॉल करेंगे, उसमें कोई सोशल एलिमेंट्स या कोई थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन या कोई भी, और उस बंद कॉल के द्वारा किसी का प्रॉपर्टी पर डैमेज करेंगे, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो, देन जितने भी जो डैमेज आइटम्स है, ऑल दोज डैमेज आइटम हैज टू बी रिकवर्ड बाय द इन्फोर्सर ऑफ द बंद.
ये क्लियर है, इट इज लॉ ऑफ द लैंड। Therefore, the government still appeal the ANYA team to call of the Bandh and come forward for talks. सरकार ने दिसंबर 29 को एक लेटर भेजा फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर ऑफिस कि if you have got some problems and if you have got some, you require some clarifications, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से प्रेसिडेंट ANYA को एड्रेस करके एक लेटर भेजा, come to us, get your all doubts be clarified. So didn't turn off. Today again, the learned Deputy Commissioner of ICR, Itanagar Capital Region, also invited. I think they turned off. Despite that, ये सब सारा बात करके भी, may the government, still there is a time, still doors are open for get clarification, for talk. और मैं ANYA का जितने भी जो प्रेसिडेंट हो, उसका जितने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को आप लोग के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि यू कम फॉरवर्ड, आप आइए, हम बात करेंगे। क्योंकि दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी प्रॉब्लम का हल रास्ता में नहीं होता है, इट इज अक्रॉस द टेबल। सो आई वेलकम द टीम ANYA to come across the table, discuss, hammer out the solution for the welfare of the state and for the welfare of the people of Arunachal Pradesh. कहीं में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो all things हम लोग ने, the government have prepared all the documents जो उन लोग क्लैरिफिकेशन मांगा है, वो डॉक्यूमेंट्स को हम लोग उसको बता देंगे कि these are the things you require, you are seeking for a clarification and we are ready. अभी भी रेडी है, कल भी रेडी है, and we are always ready forever for every section of life. कोई भी अगर सरकार से कुछ क्लैरिफिकेशन मांगता है, in the interest of the people, in the interest of the state, the government is ready. ऐसा नहीं कि हम लोग आज ही बुला रहे हैं, हम लोग बुला भी चुका है, काफी बातचीत भी हुआ है और आगे भी बात करते रहेंगे। और जो हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने जो एक सिस्टम बनाया, पॉलिसी बनाया, इंक्लूसिव जो डिस्कशन के लिए, वो जारी रहेंगे। सो इट इज ए इंक्लूसिव गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट वांट्स एवरी इन ईच वॉक ऑफ द लाइफ जो है बी ए पार्टिसिपेटरी इन ऑल आवर डिसीजन टू मेक अरुणाचल ए बेटर प्लेस टू लिव इन। सो वंस अगेन आई अपील ANYA टीम ANYA to call of the Bandh and come forward for discussion. Calling of the Bandh will give more, this thing, ज्यादा अच्छा रहेगा लोगों के लिए, क्योंकि बंद कॉल से मेरा ख्याल से 99.99% पॉपुलेशन को तकलीफ मिलेगा। तो इतने लोगों को तकलीफ करके, और जिम्मेदार सरकार को ये रहेगा कि ये 99.99% आदमी का सेफ्टी और सिक्योरिटी को देना, ये सरकार का एक जिम्मेदार रहेगा। तो थ्रू दी steamed media, through you, I once again appeal to the ANYA team to come forward for discussion. So if there is any more clarification, I welcome questions. सर, आपको नहीं लगता है कि काफी देर हो गया क्लेरिफिकेशन देने में गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उनका 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस अल्टीमेटम दिया है। तो अभी जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें इनवाइट किया गया था बात करने में, क्लेरिफिकेशन देने को, और आपने जैसे पूरा अकाउंटेबिलिटी बताया, तो उस समय को सर थ्रू मीडिया भी आप गवर्नमेंट क्लेरिफिकेशन दे सकती थी। तो आप लोग रुक रहे थे कि उनके तरफ से बंद को अनाउंस किया जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट मीडिया के थ्रू क्लेरिफिकेशन देंगे सर? हाँ, मैंने 29 को जब CMO ऑफिस से ANYA प्रेसिडेंट को इन्विटेशन, टीम ANYA को इन्विटेशन जो किया था, तो मैंने कॉल भी किया प्रेसिडेंट साहब को, और उन्होंने ये बताया कि नाउ वी आर इन द ईव ऑफ न्यू ईयर। काफी एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है अपना गांव चला गया या अपना रेस्पेक्टिव एरिया में चला गया,
तो आने का बात हम लोग डिस्कस करके फिर कन्वे करेंगे। तो हम लोग सोचा कि हम लोग इनविटेशन तो दे चुका है, तो हम लोग इंतजार था कि उन लोग आएंगे। लेकिन जो आपने सवाल किया, अगर सॉल्यूशन अगर सरकार का पास है, किस लिए हम लोग देर हो गया या जल्दी हो गया ये सब कहानी क्यों बोल रहे हैं? अगर लोगों का भलाई के लिए, पब्लिक का भलाई के लिए, स्टेट का भलाई के लिए, स्टेट के हित के लिए अगर हम लोग अगर सॉल्यूशन लाता है, तो देयर इज नो पॉइंट दैट invitation is already late or invitation is too past. We can negotiate, we can discuss across the table. सर, आन्या कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में। उनका कहना था कि हम अभी तक कोई गलत नहीं कदम उठाए हैं, जो भी मैं उठा रहा हूँ अरुणाचल का लोगों के हित में है। ठीक है, सरकार को लगता है कोई इश्यूज शायद सही सिस्टम में नहीं उठाया, सही हिसाब किताब से नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने प्रेसिडेंट जो था बमंग ने कहा कि अभी भी 2 दिन बचा हुआ है, मैं किसी का खिलाफ में नहीं हूँ, मेरा बंद को मैं अनाउंस किया हूँ, यदि सरकार क्लैरिफिकेशन दे देता, ऐसा नहीं कि अन्या को ही जाना है या आना है, मीडिया में भी क्लैरिफिकेशन दे सकता है, वी विल कॉल ऑफ द बंद। तो इसके ऊपर में मंत्री साहब क्या कहना है आपका? नहीं, क्लैरिफिकेशन हम लोग अभी आप लोग को थ्रू से दिया गया है, जो एलिगेशन दिया गया आपका थ्रू से दे रहा हूँ। ये क्लैरिफिकेशन नहीं तो ये क्या है, ये क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। अगर उन लोग अगर फर्दर और क्लैरिफिकेशन चाहिए, इसमें अगर सेटिस्फाई नहीं है, जो अभी मैंने आप लोगों को प्रेस ब्रीफिंग किया, दिस इज पार्ट ऑफ द क्लैरिफिकेशन। अगर इस क्लैरिफिकेशन को अगर सेटिस्फाई नहीं है, इफ दे वांट टू नो मोर अबाउट द क्लैरिफिकेशन, then the door of the government is open. Even today also they can come. I invite them today also. I invite them tomorrow also. Even this late evening also I am ready. तो हम लोग बात करेंगे और हमारा पास क्लैरिफिकेशन पूरा है। जो उन लोगों को क्लैरिफिकेशन चाहिए उन लोग ले सकते हैं। यार हम एक्चुअली हमको सिर्फ देना नहीं चाहते थे, हम बताना चाहते थे कि दिस आर द थिंग्स एंड वी विल प्रोवाइड देम विद डॉक्यूमेंट्स आल्सो। सर, जो आपने बताया फंड रिलीज कितना कौन सी डिपार्टमेंट कितना जो वो डॉक्यूमेंटेशन हमें भी दिया जाएगा ना सर? ये देखिए, एक तो चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो हम लोग जो है जो अभी फिगर मैंने बताया, ये हम कहीं नहीं बनाते, ये वेबसाइट में अवेलेबल है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का वेबसाइट में पूरा अवेलेबल है। इट इज ट्रांसपेरेंसी, नोवेयर इट इज रिटन माने सीक्रेट रिकॉर्ड, ये कोई सीक्रेट नहीं है। इट इज ओपन फॉर ऑल पब्लिक, ऑल पीपल। Anybody can go into the website of the finance department and you can look into it. You will get it. और आपको ये फिगर चाहिए, आपको मिल जाएंगे। तो फाइनेंस का उधर वेबसाइट है, सो ऑल थिंग्स आर टोटली ट्रांसपेरेंट है। तो उसको कोई हम लोग छिपा छिपी वाला चीज नहीं है। एंड वी आर टॉकिंग ऑन द फैक्ट्स। दिस इज द गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन स्पीकिंग। आप लोगों को बता रहा हूं कि गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन स्पीक्स ऑन द फैक्ट्स, ऑन द डॉक्यूमेंट। जो हमारा साथ फिगर है उसका आधार पर बात करता है। सर, एक डिमांड है सर, जैसे कि तिराप एंड चांगलांग डिपार्टमेंट है, टीसीएल है, डीओ टीसीएल है, जैसे कि आपका दिया है, वो डोका है, ऐसे करके नीसी इनहैबिटेंट, आई एम नॉट पर्टिकुलर टू कम्युनिटी, लेकिन आन्या का एक डिमांड रहा है, पहले से भी ये डिमांड चलता है और सोसाइटी में भी ऐसा आवाज उठते रहता है कि जैसे कि 5 डिस्ट्रिक्ट, मैक्सिमम 5-6 डिस्ट्रिक्ट डोमिनेटेड है। आज भी हम लोगों ने देखा 11 एमएलए का प्रेस ब्रीफिंग, शायद 13 है टोटल। तो एक ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डेवलपमेंट पैकेज चाहिए था या एक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक देना चाहिए था। जैसे वेस्ट कामिंग एंड तवांग डिपार्टमेंट एक हम लोगों ने एक नोटिफिकेशन में देखा था। इस तरह का भी एक डिमांड रहा है सर पहले से, और आप गवर्नमेंट स्पोक्समैन हैं तो इसके बारे में शायद आपको ज्यादा जानकारी हो। देखिए, फिर से आपको बता रहा हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट कामिंग तवांग नहीं है सर। वो नोटिफिकेशन क्या है सर? डिपार्टमेंट ऑफ कार्मिक एंड आध्यात्मिक धोखा है। तो उसमें कोई वहां में डिपार्टमेंट ऑफ तवांग और वेस्ट कामिंग नहीं है। बार बार आपको बता रहा हूं, सिर्फ एक उधर में बनाया, दैट इज धोखा। तो वो इसलिए हम लोग कंफ्यूज नहीं करना है। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज करके 3-4 डिपार्टमेंट बन गया, चलता है सिर्फ एक ही है वहां पे। तो जहां तक आपका सवाल है, ये रिक्वायरमेंट और नीड बेस का ऊपर में जाएंगे एज टू व्हाई इट इज रिक्वायर्ड।
जो भी क्रिएट हुआ है, long ago it was created. I think the DOCA was the DOCA and this thing TCL, Department of TCL, was created long ago, and there must have been a justification. So if there is any justification, we may look into it. Sir, it's. Excuse me, sir. Sir. Sir, I have a question for you, sir. Sir, there's been a lot of accusers on CM lately. So now there's also a report, circulating that that NSA and IM have warned and accused the CM and the Deputy CM tournament of acting irresponsibly and failing to restore and fulfill the wishes of Naga people in TLC district of the state. Now, you being the the government spokesperson, what do what's your statement on this? We have come across through social media, and we are ascertaining कितना तो वो सही है कि actual source से आया नहीं आया है. We are ascertaining it because ये सारा चीज जो हम लोग को पेपर नहीं मिला है, कागज नहीं मिला है, तो establish होने के बाद if it is true, then we will examine to it कि whether it is from the actual source or somebody is doing it. We will first ascertain it. So even the CDFI, one of the Delhi-based Chakma organization, so they have also accused CM of abusing COVID-19 of the against CM actually. Yeah, no. So they have sought the Prime Minister Narendra Modi intervention and accusing CM Pema Pandhu of the COVID-19 to restrict the right to peaceful assembly, especially for the Chakma and Azumbe. I think the state have holistically handled the COVID-19 and for the past 2 years, and we have not discriminated any identity or any people. Whoever lives in the within the boundary of Arunachal Pradesh, whoever lives in the territorial boundary of Arunachal Pradesh, everyone were taken care of equally. There is no discrimination to any section or any people, maybe a refugee or whatever maybe a non-Arunachali, all were taken, but equally. We have therefore we have controlled it. Sir, it's very rightly stated that certain amounts have been sanctioned in a certain zone. The money has been allocation. You have also stated the particular amount, which is great. But at the same time, down the bottom line, how is the government, how is the BJP government making sure that that amount is not being nullified? Let's face the fact that even the schools in the interior places have been completely in a dilapidated situation. If the amount has been sanctioned, where is the amount going on? It is not reaching to the places where it should be going. So how is the BJP government really monitoring it that the amount is not being nullified in somewhere in between, आपने जो सवाल किया जो एजुकेशन का बारे में, ड्यूरिंग दिस थिंग ये एसएसए टाइम में, अभी भी एसएसए है, जो एसएसए का जो प्रोग्राम के अनुसार एवरी किलोमीटर में स्कूल होना है, और आप सबको पता है इट इज नॉट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल इन अरुणाचल प्रदेश बिकॉज वी आर स्पार्सली पॉपुलेटेड. So therefore, the government have decided to close down all the zero enrollment schools. तो कहीं स्कूल जो आप लोग पिक्चर में आ रहा है, जो dilapidated बिल्डिंग है, that must be already closed down schools जो होता हो गांव में होता हो, तो that also has to be ascertained, क्योंकि जो लोग स्ट्रक्चर को गिराया नहीं गया, लेकिन schools has been closed down. तो इसी आधार पर तो इसलिए आप लोग कभी आई वुड लाइक टू अपील द ऑल मीडिया फ्रेंड्स, जो भी आप लोग रिपोर्ट देते हैं हम लोग को, बिकॉज वी आर वेरी पर्टिकुलर, जो आप रिपोर्ट देते हैं वी टेक इट वेरी सीरियसली. तो आप लोग थोड़ा सा उसको अच्छा से ग्राउंड में एग्जामिन कीजिएगा कि वहाँ पे स्टूडेंट है ना नहीं है, वेदर दैट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड क्लोज डाउन स्कूल और स्टिल इट इज फंक्शनिंग. तो देयरफॉर उसका आधार पर अभी जो है अभी द गवर्नमेंट हैव डिक्लेयर्ड दिस ईयर एज ए स्कूल ऑफ ईयर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट. तो उसका आधार पर सारा रिपोर्ट आ रहा है व्हिच आर द स्कूल्स टू बी स्ट्रेंथेंड, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करना, टीचर स्ट्रेंथन करना वो कर रहा है. So, but SSA is being also implemented, which is quite great. But at the same time,
how will you really monitor the situation? For example, let's take the example of Siyomi, right? Latu district. The schools out there is as such that there is no sanitary proper washroom tak bhi nahi hai for a female out there. So the students out there, they have to walk all the way back to their home, come back, pee again and go back. And mind you, sir, wahan mein 10 tak hai. And the girls out there, they are going through their puberty, you know. So in such situation, how will the government really come up with a solid answer ki acha ye tackle ho jayega? You know, as you said ki ye education year hai, that was last year, it's 2022. So how is the government really going to come up with a solid answers to it? नहीं, it is nothing because आपने एक तो पर्स में एक सवाल किया है कि जो भी स्कीम्स जो अक्रॉस अरुणाचल में चलता है आजकल उसमें डुप्लीकेसी तो हो नहीं सकता है. नंबर 1 बिकॉज इट इज जियोटैग. सारा स्कीम जो जियोटैग होता है इट कैन बी मॉनिटर्ड सिटिंग इन ईटानगर ऑल्सो. तो सारा चीज उधर हो रहा है. और जहां तक कि आपने जो ये सैनिटेशन का जो बात करी स्कूल्स में, I think once I was a parliament secretary for education also, the top priority was to provide sanitation in every schools. तो अभी कहीं कहीं में अगर छूट गया है, I would like to request you, तो अगर ऐसा कहीं दिखाई दिया, please convey the government, and we will seriously take the matter into consideration. सर अन्य का जो थोड़ी देर पहले मेरे कलीग ने भी पूछा था रिगार्डिंग डोका डिपार्टमेंट को लेकर से, तो आपने कहा था कि मिसलीड ना करें, कंफ्यूजिंग ना करें. तो मैं बता देना चाहती हूँ कि सिर्फ आन्या नहीं, काफी लोग जनता भी कंफ्यूज है डोका को लेकर. तो आज एज अ स्पोक पर्सन आप मीडिया भी सभी है, तो क्लियरिफाई कर दीजिए एग्जैक्टली डोका किसके लिए काम करती है, क्या काम करती है. नहीं, डोका जो है आई थिंक उसमें एक जो गाइडलाइंस जो बनाया गया है, तो किस आधार पर आप बात करते हैं आप लोग को हम लोग ये कागज में हम लोग दे देंगे as to why this DOCA has been created, why TCL, the Department of TCL has been created. We will provide you all in documents so you can switch it with it. Any more? Thank you. So I welcome for